Yes, very good morning everyone. Quickly tell me, suppose one to two questions will ask from each exercise. Okay? So हर exercise से एक से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे कि for example, if we are talking about exercise 1, the questions which we have, 1 to 10. Very good. So first let us discuss some questions from exercise 1, 2, 3 like that. So suppose I am asking some questions from exercise number 1. 9,500. How we will write 9,500? Quickly tell me everyone. 9,500 हम लोग कैसे लिखेंगे नंबर में बताइए. How we can write 9,500? 9,500. Yes, very good. So very simply we'll write 9,500. 9,500, right? In the same way, if we are moving to second question, it is just opposite. Here it is asking using these all number which is the 4-digit number which you can form greatest 4-digit number. तो जैसे कि the number which it is given are 5018. So 5018, these are the numbers which we have. 5018. So using these four number 5018, using these numbers you have to make the greatest 4-digit number. तो क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग दिस ऑल डिजिट्स. ये 4 डिजिट मिला के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग कौन सा फॉर्म कर सकते हैं? विच इज द पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर विच वी कैन फॉर्म? यस, वेरी नाइस. हुएवर आंसर इज 8510 is absolutely correct answer. So 8510 means 8510 is absolutely correct answer. Very good. It's not in gram, ये gram में नहीं है. So this is the number. Moving to the questions related to the place value. Now this is asking write the place value of the required number. तो एक नंबर दिया हुआ है, उसका place value पूछा जा रहा है. So let us see quickly how many of you are aware about place values. So the first question or any questions I am taking randomly. Suppose one question is there which is 5705. So it is asking about the place value of the underlying number. So underlying number is here in this 5. So इस 5 में underline किया हुआ है. Quickly tell me everyone what will be the place value of 5? Yes, very nice. So whoever answer is 5 is absolutely correct. So जिसका भी आंसर 5 है बिल्कुल सही जवाब है. So place value of this number will be 5. ठीक है? Yes, very nice. So this is how if we move further, अगर हम लोग आगे बढ़े, so the further number which we have is write in Hindu Arabic numeral. So you have to write the Hindu number of the Roman number which it is given. So the Roman number which it is given are as like one question I can take here x I x. So this is the required number which it is given x I x. So you have to tell this number means what exactly. Whoever answer is 29 is absolutely correct answer because 2 tens and 9, so 29. So 29 is the required number. Okay? Yes, very good. So this type of questions will become, other than this, one very important questions is there which it is asking about the finding the difference in the place value. So difference in the place value निकालना है as like here one number we have which is 3009. Now it is asking find the difference of the place value of these two number. So what will be the difference of the place value of these two number? Quickly tell me. ये दो नंबर का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है. द क्वेश्चन विल आस्क लाइक फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्लेस वैल्यूज.
Yes, very nice. So the place value of 3 is 3000 and place value of 9 is this, and if you want to find the difference means we have to subtract. So if we subtract, then it will be 9 plus 1 is 10. So this will be 9 now. So this will be 9 now, this will be 9 now, this will be 2. Okay, so 2991. 2991, whoever answer is absolutely correct answer. Okay, so this type of questions will come. So 2 to 3 question will come from exercise number 1 like this. 2 से 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट एक्सरसाइज से इस तरह से आएगा, जिसमें आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा विद डिफरेंट वैल्यूज. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच वी हैव, एक्सरसाइज नंबर 2, दैट इज रिलेटेड टू the addition and subtraction of numbers. So I don't think anyone having any problem in addition and subtraction. हमको नहीं लगता है जोड़ घटाव में किसी को कुछ दिक्कत है, बट फिर भी हम लोग कुछ जो है वो समझ लेते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस, द क्वेश्चन इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, greatest 4 digit number, instead of 4 digit it can be a 5 digit number also, 5 digit का भी रह सकता है, and 4 digit number and 2 4 5 6 8. So instead of 2 4 5 6 it can be another number also. So आप इसके हिसाब से बताइए, according to this question, what will be the difference of largest or greatest 4 digit number and this. So first you have to know what is the greatest 4 digit number, 4 times 9, okay, and then this number, and you have to again find the difference. So if you see 4 digit greatest number will be 1 2 3 4 and the remaining number is 2 4 5 6 will be 2 4 5 6. Then if you subtract it, so 6 plus 3 is 9. Okay, 5 plus 4 is 9, 4 plus 5 is 9, okay, 2 plus 7 is 9. So 7243 is coming answer, right? 7543. 7543, sorry, 7543. So the difference will be 7543. So very simply, whenever it is asking 4 digit greatest number, you have to write 4 digit greatest number. If it is asking any other number, you have to write any other number and find the difference. Okay, so very easily इस तरह से आप difference निकाल सकते हो और जो है solve कर सकते हो. Okay, so this question understood everyone? इस तरह से question एक आएगा ही. It can be a 4 digit, 5 digit, 6 digit or any other number, but आपको find करना है difference. Okay, moving to further related to the addition or subtraction of number. So let us see one more. Herein suppose addition and subtraction together is there and you have to tell what is the difference. As like here one question we have 2 1 3 4 2 1 3 4 plus 2 4 1 6 minus 1 2 0 0 1 2 0 0 is equal to dash, is equal to dash means how much? Okay, so very simply you can see in this case what will be the result. So first you have to check it out कि this much you have to add, and after then you have to find the difference and you have to check it out. So if you add this, what will be the answer, and after then after subtracting check it out what will be the answer, that will be the answer. So here ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही हम लोग ने कुछ और कर दिया. So हाँ 6500 जो भी आएगा देख लेना है. तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो पहले कितना आ जाएगा, let us see 6 plus 4 is 10, so 0 0, so 1 carry, 3 plus 4 is 3 plus 1 is 4 plus 1 5, okay, 4 plus 1 is 5 and 2 plus 2 is 4. So 4550 आ रहा है, 4550 minus 1200. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, जितना भी आएगा that will be the answer. Okay,
So this is how you can do the questions related to addition and subtraction. इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन टुगेदर रहेगा, दोनों एक साथ. मूविंग टू द फर्दर, based on addition and subtraction exercise number 3, one questions will be related to the fill in the blanks also, as like you have to check it out ki which number will be filled. So for example, as we have learned like this type of numbers, wherein suppose you have to fill this number. Okay, so here it may be like given ki A, B, तो आपको A, B और यहाँ पे मान लीजिए C दिया हुआ है, and you have to tell what will be the number in A, B, C. Okay, what will be the number in A, B, C? So you have to tell the numbers in A, B, C. And here suppose a number are given 4200. Okay, here some number will be given as like 4200. Here some operations will be given as like equal, and then equal here also, and then minus here, and then plus here. Okay, so here now you have to tell ki what number will be in A, what number will be in B, and what number will be in C. Okay, so this type of questions, if you all remember, we have done. So here first we need to check it out ki how much or two numbers we will write here, so that the difference or this will be 4200. Okay, so 4800, if you subtract from 4800 means 4800. From this if you subtract 600, then you will get 4200. ठीक है, तो आपको जो है ये फिल करना है कि A में इतना होगा, B में इतना होगा, और C का वैल्यू चेक करना है. How much you will add 600, how much you will add with 600, so that answer will be given. So this much only. Okay, but 46, हाँ, तो आपको ये चेक करने के लिए just you have to check these two number. Hmm, 600 is here. So how much you have to add with 600 so that you will get this much? To check it out, you have to subtract 600 from that. So 3600, you will get 3600. 3600 के साथ अगर आप 600 ऐड करोगे, then you will get 4200. ठीक है, 4200, क्योंकि अगर आप 4200 से 600 सब्ट्रैक्ट करते हो, then the answer you will get is 6 plus 6 is 12 and 3. तो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि how much we have to add here. Okay, so this type of questions will be asked or may be asked. Okay, after then moving to the further question related to third or fourth exercise. फोर्थ एक्सरसाइज में हम लोग का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज में देखते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सपोज वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग एज लाइक 11 मल्टीप्लाई 7 माइनस 11 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई हाउ मच प्लस हाउ मच. So this you have to tell, and at the finally what will be the result, that you have to tell. So here it will not be plus because this is negative sign, so definitely it will be also negative sign only. Here also this will also be negative sign. So 11 we have taken common, so this is 7 we have and this is 6. So 7 minus 6 it will be, and if it is 7 minus 6 then the answer will be 11 multiply 1, then it will be 11. So directly it will ask for the answer. इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहता है तो ये आंसर पूछा जाता है. ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन विल बी गिवन. ओके, देन यू हैव टू आंसर लाइक दिस. हाँ, 7 minus 6 is 1, so 1, 7 minus 6 is 1, so 11 1 are 11 only. So this answer directly you have to write. Okay, इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड.
क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइदर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। आई होप एवरीवन इज नोइंग दैट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दीज आर द one another's opposite. So suppose it is asking for the multiplication fact. So it is like 88 divided by 11 we know is 8. So this is the thing which we know, this is the concept which we know. If you divide 88 by 11 then you will get 8. तो आपको 8 जो है वो आंसर मिलेगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे होता है कि इफ यू मल्टीप्लाई this and this you will get the answer this. Okay, so 8 multiply 11 will be 88, and if you multiply this and this also answer will be this. So if you multiply 11 into 8 this will also be 88. So these two are the multiplication fact of this division. ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है ये दो, ठीक है। तो this I hope understood everyone. Now further what we have is division fact. तो division fact just opposite of this, इसके opposite है। जैसे कि मान लीजिए for the understanding of division fact we can take one example. एक एग्जांपल हम लोग लेके एग्जांपल के तौर पे समझते हैं डिवीजन फैक्ट। So the question will be given like this, इस तरह से दिया हुआ रह सकता है कि the division fact of 4 multiply 5 is 20. So 4 multiply 5 is equal to 20. This we know, right? So this is the multiplication. Now you have to find the division fact for this. So division fact for this will be 20 divided by 5 is equal to 4. And if you divide 20 by 4, we'll get answer as 5. So these two are the division fact. ये दो डिवीजन फैक्ट है। एक डिवीजन फैक्ट आप लोग बताइए, जैसे मान लीजिए द डिवीजन फैक्ट ऑफ 3 multiply 5 is equal to 15. इसका डिवीजन फैक्ट बताइए सभी कितना होगा। 3 multiply 5 is equal to 15. What will be the division fact of this number? Quickly tell me everyone. ये जो नंबर है इसका डिवीजन फैक्ट क्या हो जाएगा? 3 multiply 5 is equal to 15 का क्विकली राइट इन मैसेज। 3 multiply 5 is equal to 15 का what will be the division fact? अनुज्ञा, वन मोर, और एक होगा, दो डिवीजन फैक्ट होगा, दोनों लिखना है, ठीक है। तो डिवीजन फैक्ट जैसे इसका हमने 2 बनाया, इसी तरह से 2 होगा। 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5, हाँ ठीक है, और एक, हाँ। So very easily we can write down the division fact of this is equal to like 15 divided by 5 is equal to 3 and 15 divided by 3 is equal to 5. So these are the two things which you will get. These are the two things which you will get. Okay? हाँ, very good. So multiplication है ऑलरेडी दिया हुआ, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, बट इसको डिवीजन में चेंज करना डिवीजन फैक्ट कहलाता है। तो इसका डिवीजन फैक्ट ये हो जाएगा 15 divided by 5 is 3 और 15 divided by 3 is 5, ठीक है। तो these are the things. After then some word problems will be asked, some not. Word problems will be asked, many, maximum word problems will be there, maximum long questions will be there, so which you need to solve in your classwork copy, and after then you have to answer. So what I observe is maximum of the students are there, they used to be in hurry. तो हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी नहीं करना है, अदरवाइज मैथ्स में वैल्यूज चेंज करके दिया हुआ रहता है, सो यू विल देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो कभी भी आप करते हो, यू टेक टाइम, सॉल्व 2 times, ओके। इफ यू फेस एनी doubts, any problem is there in the question and all, or you are not getting answer, then you can consult with the subject teacher. And in each and every subject you take whole time, 30 minutes of time. यहाँ पे we are not conducting any competition of like this type of things wherein you have to submit within 1 minute or 2 minutes. Some of the students used to submit within 5 minutes also, so which you should not do. तो आप लोग टाइम लोगे पूरा 30 मिनट का टाइम जो आता है पूरा, एंड आफ्टर देन सबमिट करोगे उसको, टेस्ट को, ठीक है। टाइमली दोगे, everything we got to know. Some of the students used to give the test after the time, so those record also we get. हम लोग को पता चल जाता है कौन कौन स्टूडेंट्स जो है किस टाइम में टेस्ट दिया है, एवरीथिंग आर रिकॉर्डेड। तो उस तरह का स्टूडेंट्स जिसका टाइम के बाहर का आएगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा रिजल्ट में।
So give the test on time as per the schedule. Okay, and you will get the schedule by again today with the syllabus details. Okay, and be ready for the final exams also. Okay, and everyone come to the schools with the proper precautions and all. Okay, अच्छे से मास्क वगैरह पहन के सैनिटाइजर्स वगैरह लेके स्कूल में आएंगे, सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो भी क्लास चालू होने जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारोज टेस्ट। पीरियडिक टेस्ट के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से टेस्ट दीजिए, अच्छे से रिजल्ट कीजिए, फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।